333 for 9. .23 required, 1 wicket in hand. Do you remember a more dramatic final, Bazid, than this one? Yes, the World Cup final, England versus New Zealand. Who doesn't remember that? Again tried to smash it out of the park. There's always a lot of force. He tries to force the issue, Hassan Ali. 89 now. Khalid Usman, Irfan Shah bowled well. Khalid Usman still very much business. He still is twirling his moustache. He doesn't look too phased about the situation, Bazi. Why would he? Leading wicket taker of Azam Trophy. Waqas Masood, the job to just keep the bowling out. Does that and does it even better. Does one thing more, gets off strike. Hassan Ali on the verge of achieving something very special. To win it from here will be an extraordinary achievement. It's in the air! Well, Zohaib Hussain jinxing that. Might have been KP's victory, but because in unison commentators go in the air, it's never going to go in two-hand. It's been such an exciting hour or so. We all got very excited about that. And it lands in no man's land in the end. It's still not over. 20 now. $115 overs gone. It's 336 for 9. Morning change, right from over.
Irfanullah Shah now comes into the attack. Four for 73 in the first innings. A couple of wickets in the second too. Is he the answer to Hassan Ali's aggression? He's 1 wicket away now, Khyber Pakhtunkhwa. Goes leg side, goes big. Has that gone all the way? You bet you have. Wow. Hassan Ali is playing the innings of his life here, and possibly the most consequential innings of this entire season. 14 now required. This is how he welcomed Irfanullah Shah. There we go, Hassan Ali 96, 13 to win. Does he get to 100 with a maximum? Irfan. Short of a land, top edge over the slips. Gets to 100. First century in first class here. What a time and what a moment to do that. Captain courageous. Led with the ball, but it didn't matter now because he had needed to play that innings that he's never played before. Wow. Off just 58 deliveries as well. What a time to bring your maiden century. Leg side, just the one. Countdown now, 9 needed. He comes in at a situation where nobody, even the greatest of Central Punjab supporters, is giving them no chance. And he's turned it on, well, he's turned it on big time. 9 4s, 7 6s, strike rate 171. Khyber Pakhtunkhwa still need 1 wicket. Can happen any ball, but 9 runs now. Who would have thought? The only person I can think of is Ali Yunus, who's never giving up on Central Punjab, and he's still not given up. And why would he? Round the wicket. Hassan Ali came at the crease at 202, still more than 150 required. This is his extraordinary 100, his maiden century in first-class cricket, and possibly the most consequential innings of this entire season. He attacked from the word go, 24 of 1 over as well of Sajid Khan, and he attacked the fast bowlers as well. He took the field and the boundary. It didn't matter to Hassan Ali. He went about his usual business. 58 ball 100 for the captain. Timed the ball really well, Hassan Ali. Look at that, found the gaps despite the fact there were about 4 people at one point in time. What a century. He knows that the job is not done yet. 9 more runs for Central Punjab. Class Maqsood, solid,
Azam. 9 needed. 347 for 9. $347 for 9, more importantly 9 more required, and that's been Hassan Ali, the hero for Central Punjab. Khyber Pakhtunkhwa on the other hand need 1 more wicket. Still anyone's game. Smashes it offside, just takes a single. Masood has not looked as if he'll get out. Eight runs needed to win, 7 for a tie. Last time a Azam Trophy game was tied was 2011. Unfortunately, we don't have a super over. It has narrowed down to this, that we can't really take tie out of the equation. Masood facing Arshad Iqbal. Bazid, who's your favourite at the moment? Central Punjab or Khyber Pakhtunkhwa? My favourite's always been Tariq Saeed, no doubt about that. Defends. They could almost just bat through and get those runs without attempting a big shot, but I still feel that it'll be very unlike Hassan Ali now to change gear. He will do it in a boundary. He will attack that leg side. And the way that he's hit the ball, he could just do this in a couple of hits. Across Masood, he has to get through these 3 deliveries or get a single. Gully now has been posted very close, so they're searching for that outside edge. Defense, chance of a single, no. Hassan Ali wants to keep strike next over. So 2 deliveries. Plus Masood, all he's going to do is try and block these out. Of course, we've established this a lot of times since morning, that it's Tariq Saeed and Sanami's birthday. It's both very much closely associated with the game of cricket in different ways. Couldn't have asked for a better birthday gift. What an absolute great finale. That's a very, very sweet treat for them, isn't it? He takes a single. This should now be interesting. What does Khalid Usman do? Does he tempt Hassan Ali with bringing the field? Well, just a couple of people in. I think if he keeps the field as is with the boundary riders, is the opportunity just to take the single and then finish it with 1 shot. Discussions all around. It's almost this time where the captain goes to his gut feeling. The gut feeling is to get mid-wicket in.
There's the cover in, there's a mid-wicket in. So maybe, well, he's still got that in-out field, so he's trying to make sure that at least it's not a giveaway. The single's not a giveaway. Hassan Ali goes square. Well, he doesn't need the single. Has he done it? We have to check this. Hassan Ali thinks that it's a boundary because he's not celebrated. Yes, it is a boundary, so it's down to 3 now. Wow, what extraordinary scenes here at the National Stadium, Karachi. Hassan Ali again getting a very crucial boundary right at the end of the over. For a moment it looked that it was a 6. We thought that it's a 6, but the umpire has signaled 4, so 3 more runs to win. A lot of permutations and combinations at the moment. It's pretty simple actually, because in case of a tie, the trophy will be shared, and that's because after the first innings, the respective points were equal, and that again, I mean, that is due to that declaration of Hassan Ali with a deficit of 43 runs. The way Hassan Ali is going, I don't think so it's going to be a tie. It's either a boundary or he's going to get out. What an innings. Whichever way this final now goes, this will be remembered for a long, long time. Sajid Khan, the most successful bowler, has been given the responsibility of what could be the final over of the season. Trying to turn it to the leg side to get a single. Does that, succeeds. Will they come back for the second? Yes, they will. Scores are tied. Central Punjab now cannot lose. Just one more to get. Wow. What an absolute thrilling end to this match. Among all other things, if they're able to take one more run, it also break the record for the highest successful chase at the National Stadium, Karachi. Goes down the ground. Absolutely extraordinary. No super over one. What a match. What a climax. Sajid Ali. Sajid Khan, 67 wickets. What a time to get that one. Match tied, trophy shared. The rocket fuel generator, Hassan Ali, well, he's made sure that his team gets a hand on the trophy. This man has made sure that Khyber Pakhtunkhwa don't lose it. Wow, what scenes here at the National Stadium, Karachi. Hassan Ali stayed not out on the other end, but what a performance by Sajid Khan as well. Let's talk about Hassan Ali first. Absolutely brilliant innings from him to get his team to where they are, to get one hand on the trophy. It will be tied now, and both teams will share the trophy. What happened after the first innings, once again, because of that declaration, the points were equal, and now the Quaid Azam trophy will be shared between Central Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. What a match, what a match.
First time ever Quaid Azam Trophy. Final being tied. Well, 2011, the last tied game. Hassan Ali, what an extraordinary innings he's played. Captain Courage as well. One-man band really because of the innings he's played today. Deserved the victory. But Khyber Pakhtunkhwa, Sajid Khan coming to the fore at the very end. This is the attempt to clear mid-on, goes straight to the man. Kamran Ghulam with the catch, Sajid Khan with the wicket. Well, finally something to show for it. Almost looked dead and buried. He has that demeanor and gestures of a warrior as well. What a comeback from Sajid Khan. He just needed that moment of magic, because there was no margin of error after this. It's a tie. Central Punjab needed a single, not to be. The honours even in the end. Never forget January the 5th. What a game, what an extraordinary turn of events. 106 of 61, Hassan Ali turns the match around, and when everybody thinks that this is it, they almost celebrated the ball before. They'll be disappointed, they were elated, but they still have hands on the trophy. Abdul Razak saw it slipping away, big time, and he thought this is it. But then yet again, Sajid Khan, the off spinner who's been extraordinary all season, but the wicket that he'll remember will be this last one. In the World Cup final, England prevailed the barest of margins. There was no such thing here, because the points were equal as well. So it's Central Punjab and Khyber Pakhtunkhwa will lift the trophy. We don't have a loser here. Both teams are winners. What a performance by Hassan Ali. I mean, it's exceptional to say the least. Still unbelievable, still people hugging each other, and they cannot believe what transpired. Everybody thought that this team was dead and buried in come lunchtime or come the first delivery after lunch as well, and suddenly they celebrate being champions. It's shared, but they are champions. Central Punjab with extraordinary campaign of Quaid Azam Trophy. They, after the first half, looked as if they wouldn't even be in the top four, and suddenly Hassan Ali, first with the ball and a few games with the bat, took them to the final. The final, they looked for all money, that was it. The luck had run out, or the performances had run out. Because I don't have the names from but Hassan Ali, well, it wasn't with the ball. Surprise, surprise, it wasn't with the ball. It was with the bat, and I'm saying this might take more than 3 minutes. bat, I don't well, have the it names talked of the winners. and more. It just hit the ball 7 times over the fence and 10 times to the fence. Joint winner है साकिब joint winner It's been quite an eventful day's play here. The final day of the Quaid Azam Trophy. This is the match highlights.
Of course, was Khyber Pakhtunkhwa won the toss, elected to bat. Waqas Maqsood giving them. And Asrarullah playing a good innings. He played really well. Amin scored his half century too. And there was some bounce on 1-2. Asrarullah was in form with the ball. Central Punjab. Looked good. That was one of the balls of the match. Khalid Usman, 3 wickets, one of them was there. They were declared with a deficit of 43 runs. Early success again. Waqas Maqsood has been very impressive with the new ball. Asrarullah got another 50, then it was up to Kamran Ghulam, who made sure that his form continued. Just drove Khyber Pakhtunkhwa forward, got to 100, got to the record. Also that was his 100. Khalid Usman then took the attacking option. He hit a few boundaries. A brilliant catch to dismiss Kamran Ghulam. Khalid Khan joined the act and he hit a few boundaries as well. It was Khalid Usman dismissed by Hassan Ali in the start of Central Punjab's innings, and bit of a fight back with Usman Salahuddin. And saw this morning, straight away Arshad Iqbal started it off, and it looked for all money that we were going to get to victory pretty soon. A couple of extraordinary shots from Qasim Akram before getting dismissed. Man, it was all Hassan Ali. Hassan Ali just turned the whole game around with extraordinary hits. A no ball when he was on 38. And after that, he just carried on hitting it out of the ground every time. The partnership with Ahmed Safi and the opportunity for a stumping, which just after that delivery, smashed down the ground, out of the ground, got to his 100. Extraordinary innings, and those 2 runs meant that the match was tied. Central Punjab was celebrating, but then this happened. He hit it straight to mid-on. Match tied. Extraordinary events. Extraordinary final. Azam Trophy final. Who would have thought? What an absolute beauty. And that man, the trophy shared Hassan Ali with the performance of a lifetime. All started with KP batting first, getting to 300 courtesy Kamran Ghulam 76, Adil Amin 75 and Asrarullah 61. Waqas Maqsood with 3, Hassan Ali with 4, and wicket shared after that. 97.5 overs, first innings ended at 300. In reply is 257 for 9, the declaration with 43 runs still to get. Qasim Akram 60 not out, Usman Salahuddin with 60. 4 wickets for Irfan and Arshad Iqbal with 1 wicket, but Khalid Usman 3 for 32 when they had a lead of 43 at the end of the first innings.
And then Kamran Ghulam got to another 100. Israr 63 and Khalid Usman a quick fire 53 and went 312 all out. And Maqsood got 4, Hassan Ali 1. A couple of wickets for Arshad Iqbal, 312. Meant that 356 to win, and they got to 355 courtesy an extraordinary innings. 106 of 61, 35 from Ahmed Safi of 23, and it transpired that the match was tied. 4 wickets for Sajid Khan, 3 for Arshad Iqbal, 2 for Irfan, but the most important wicket was the last one where Sajid Khan dismissed Waqas Maqsood and meant that the game was tied, and that meant that in 60,000 first-class matches played in history, this is only the 67th match that was tied. 355 is the 4th highest total in a tied test, so extraordinary, and that was it, match tied. 106 of 61. Hassan Ali led from the front and almost got his side to be the #1 side, but they're still #1 because the trophy will be shared. And that has meant that this guy, he's been brilliant with the ball and the bat, and he's made sure that his team get a hand on that trophy. Central Punjab, extraordinary turn of events in this Azam trophy, rising for them the depths of despair and coming into the final, and in the final the same sort of situation where you thought they're down and out, but Captain Courageous starts his rocket fuel generator and gets them to the final trophy, gets their hands on them. And now it'll go downstairs for the presentation. Okay, welcome to the post-match presentation of the final of the Quaid Azam Trophy, and what a game we've had today. I mean, to the wire, and it's just a draw. Otherwise, it's tough to decide who was the deserving winner. What a fight back given by Central Punjab and their captain Hassan Ali along with the tail-enders, and hard-fought battle by the KP bowlers and fielders as well. And eventually, there's no outright winner. Both of them have played real good cricket, tough cricket, and they've shared the trophy this year. I've got a lot of awards over here which I'd like to share throughout the tournament, a double league tournament. Each team played 10 games aside, and then the top 2 qualified for the final. So we'll start off with actually with the performance of the afternoon, a performance of the match. If you talk about the player of the match, there were some very good performances through and through, but in the last 45 minutes an hour, someone came out and completely scratched everyone's name out, and that's our player of the match, who's got 106 of just 61 balls, 7 sixes and 10 boundaries. Hassan Ali is the player of the match. He'll get his reward for 50,000 rupees and the trophy that is in front of him. Brilliant performance by Hassan Ali, and made a match out of this and fought right till the end. Hassan, आपसे थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपकी बैटिंग के बारे में. एज अ कप्तान आपसे बाद में बात होगी. जब आप आए थे तो ऑब्वियसली डाउन एंड आउट था सेंट्रल पंजाब. एक क्लियर माइंडसेट के साथ आप आए थे कि रोकने का या टाइम के साथ खेलने का कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल, देखिए जो टाइम हम पे प्रेशर था ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी बैक टू बैक विकेट्स गिर रही थी, तो माइंड में यही था कि अगर जो भी बॉल हमारे रिडार में आएगा हम उसको खेलेंगे, तो वही पॉजिटिव माइंड था, क्योंकि वही डिडंट एनीथिंग टू लूज़, हमारे पास कुछ हारने को था नहीं, तो यही था. बट राइट टाइम पे हमने राइट डिसीजन लिया है, और आई वांट टू अप्रिशिएट द वे अहमद सफ़ी एंड वकास मकसूद प्लेड विद मी. और ऑब्वियसली मेरी ज्वाइनिंग है ऑब्वियसली वो मेरी टीम के लिए थी कि जिस तरह से मैच टाई हुआ है. अच्छा, 150 रन कुछ चाहिए थे जब आए थे बैटिंग के लिए. एक होता है कि एक अंदाज़ा लगाया कि मारना है. बिलीव कब शुरू हुआ था कि ये तो मैच जीत सकते हैं? देखिए, बिलीव के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, और आई एम स्ट्रॉन्ग. मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो खुद पे बिलीव करता हूँ, तो मुझे बिलीव था कि अगर मेरी जिस तरह मैं खेलता हूँ, अगर मैं थोड़ा टाइम खेल गया, इवन आई स्पोक विद माई कोच कि अगर मैं 1 घंटा अंदर आ गया तो आई टेल यू कि
गेम का सिनेरियो क्या होता है, तो वही हुआ। मेरी माइंडसेट यही था क्यों, बिकॉज ये रिलैक्स इनको विकेट्स मिल रही थी। इनके तो आई थिंक ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि इस तरह खेलेगा। सॉरी। तो फर्स्ट क्लास की सेंचुरी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। एक ओवरऑल परफॉर्मेंस, जीत जाते तो और ही बात होती, लेकिन इंडिविजुअली बैटिंग परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन होंगे। यस, ऑब्वियसली आपका पहला 100 है और फिर ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे आपकी टीम को ज़रूरत है। और मेरे माइंड में वो एशेज़ का मैच भी चल रहा था जब बेन स्टोक ने वो जितवाया था मैच। बट इट्स हैपन, दिस इज़ द रियलिटी, यू कांट विन एवरीथिंग, और एंड ऑफ द डे इट्स क्रिकेट विन। और आई थिंक बहुत टीम इंजॉय। चलिए, एज अ कप्तान आपसे बात करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एंटरटेनिंग अस। बहुत शानदार इनिंग थी आपकी, 106 रन सिर्फ 61 गेंदों पर। कायद आज़म ट्रॉफी में बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज रही, ओवरऑल भी इंडिविजुअल भी। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, विकेट कीपर की बात करते हैं। बेस्ट विकेट कीपर जो कि अवार्ड हासिल करेंगे 5 लाख रुपए का, जिन्होंने 26 कैच और 9 स्टंपिंग्स की, 35 डिसमिसल्स टोटल, रेहान आफरीदी। वो अपना 5 लाख का अवार्ड, कैश अवार्ड और ट्रॉफी अपनी पिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच रेहान। अगला अवार्ड जो है वो है बेस्ट बॉलर का, और एक टीम जो तकरीबन काफ़ी टाइम टूर्नामेंट में टॉप पर ही रही, उसी की तरफ से एक और शानदार परफॉर्मेंस। मैंने लिख दिया था पेपर पे 67, लेकिन 67th लिखी हुई थी उनके नाम पर। साजिद खान, बेस्ट बॉलर, वो भी अपना 5 लाख का अवार्ड और ट्रॉफी कलेक्ट करेंगे। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे ही ग्राउंड्स पे, और आज नेशनल स्टेडियम में भी आखिरी विकेट लेके इन्होंने मैच ड्रॉ करवा दिया। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर। और इस बार ऐसा लगता था कि कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, रन्स का उन्होंने अंबार लगाया। 5 सेंचुरीज, एवरेज 62.45, 1249 रन। कामरान गुलाम, ये भी अपना 5 लाख का कैश अवार्ड और ट्रॉफी कलेक्ट करेंगे। कामरान की बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्कोर इन अ सीजन बाय एनी बैट्समैन एवर इन कायद आज़म ट्रॉफी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के मैच के मैन ऑफ द मैच को ही, जो कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैं, हसन अली। ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस विद द बॉल, ऑफ कोर्स विद द बैट कहने की जरूरत नहीं, पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी, और जिस तरह से टीम को लीड किया और फाइनल में लेकर आए, ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस। और इसी में साथ साथ मैं एज अ कैप्टन आपसे बात भी करना चाहूंगा। हसन, एज अ कैप्टन बात करते हैं आपसे। आखिरी 5 मैचेस को आप देखें, 3 विक्ट्रीज 2 ड्रॉ, फाइनल में आप आए, टेबल पे लास्ट पे थे। कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था जब आपने कप्तानी ली? ऑब्वियसली देखें, जब पहले 5 मैच हम खेले तो हम बॉटम पे थे, लेकिन फिर हमारे जो कोच हैं उनसे बात हुई कि आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि क्या आप रेडी हैं? तो मैंने बोला ऑब्वियसली मैं रेडी हूँ, आई लाइक चैलेंजेस। तो उन्होंने मुझे बोला कि एज ए कैप्टन आप लीड करोगे टीम को। तो हमारी जर्नी बहुत खूबसूरत है, और वी प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। हमने बहुत हार्ड वर्क किया है एज ए यूनिट, वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और ऑब्वियसली छठे मैच के बाद हमारा मोमेंटम बना, और बिकॉज हम बॉटम पे थे, फिर एकदम से हम मैच जीतना शुरू किए। तो इस सारी जर्नी में जो थी एक चीज़ हमारी थी, वो यूनिटी और फेथ, और हम अपनी यूनिटी और फेथ को लेके चल रहे थे। और जो पिछला मैच था हमारा सेकंड लास्ट मैच, वो हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट से बोनस से जीतना था। तो उसमें भी मेरी टीम है उसने बहुत एफर्ट की, और हमने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। तो मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत जर्नी है। पहली दफ़ा फर्स्ट क्लास का कप्तान बना, और मेरी टीम ने मुझ पर एतमाद किया, मेरी मैनेजमेंट ने मुझ पर एतमाद किया। तो आई रियली वांट टू थैंक्स ऑफ देम कि जिस तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली दुख है हमें, जिस तरह हमने मेहनत की है कि हम फाइनल नहीं जीत सके, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रिकेट। डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह आपकी टीम ने खेला है। ये बताइए, पूछूंगा नहीं तो लोग सब पूछेंगे मुझसे कि बात क्यों नहीं की। हम सब आराम से बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, अचानक से ये डिक्लेरेशन जो आपने कर दी 45 रन के डेफिसिट के साथ, ये सोच के रखा हुआ था, अचानक ख्याल आया?
नहीं बिल्कुल देखिए हम हर टीम ने प्लान बनाया होता है, हमारा भी प्लान यही था कि हम लंबा खेलें, बट सडनली हम लंबा नहीं खेल सके, हमारी विकेट जल्दी गिर गई, बट हमारे पास स्टिल चांस था कि हम अगर डिक्लेयर करते हैं तो फिर मैच ओपन हो जाएगा। तो वही हुआ, हमारे कोच मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि व्हाट यू थिंक अगर हम इस तरह कर ले तो मैच ओपन हो जाएगा। तो बिल्कुल वही हुआ, 6 पॉइंट थे, हमारे भी 6 पॉइंट थे, उनके भी 6 पॉइंट थे, तो हमने कहा लेट्स सी जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, और इसलिए हमने वो डिक्लेयर किया। आपने अपनी टीम का बहुत जिक्र किया है, कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज रही, बहुत सारे ऐसे बैट्समैन बॉलर्स रहे, कासिम अकरम की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही, कोई ऐसे नाम जो आप बताना चाहें जिनकी परफॉर्मेंस ने आपको ज़्यादा एंटरटेन किया उसे कप्तान? देखिए मेरे लिए तो मेरी पूरी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इवन के जो प्लेयर जिनको चांस नहीं मिला, जो बाहर बैठे हुए थे, मेरे लिए वो भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं, और मेरी मैनेजमेंट है वो भी उतनी इसी तरह है, बट देयर इज़ अ फ्यू नेम्स कि जिन्होंने बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया, लाइक कासम है, अहमद सफ़ी है विद द बॉल, और वकास मकसूद उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उस्मान सलाहुद्दीन, आई थिंक इसके 900 समथिंग रन्स हैं फर्स्ट क्लास इस सीज़न में। फिर शाह नसीम है, मोहम्मद साद है, तो एवरी सिंगल प्लेयर जो है उसने हमारे लिए परफॉर्म किया। तो मेरे लिए तो सारे प्लेयर जो है वो टाइगर्स हैं मेरे, वी आर चैम्पियन। Yes. चलिए हसन अली, congratulations, player of the tournament, man of the match of the final, and of course almost took the I trophy. want to say something if you give me a जी प्लीज़ बोलिए। यहाँ पे मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगा PCB का, कि जिन्होंने इस कोरोना में भी पाकिस्तान का प्राइम टूर्नामेंट उसको कामयाब बनाया। फिर थैंक यू सो मच ऑल द ग्राउंडमैन जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सिक्योरिटी और लोकल डिपार्टमेंट्स, मीडिया, और ऑब्वियसली आप लोगों का, आप लोग बैठ के हमें हमारा मैच कवर कर रहे थे। थैंक यू सो मच ऑल दोज पीपल्स के जिन्होंने इस बुरे टाइम पे, सख्त टाइम में, कोरोना में जो है वो इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। और स्पेशली थैंक्स फॉर प्लेयर्स कि 2 महीने से एक ही रूम में आना जाना, तो आई थिंक ये बहुत हार्ड था हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑफ देम कि जिस तरह इन्होंने इस सिचुएशन में अपने आप को, अपने जो है नफ्स पर कंट्रोल किया और अपनी परफॉर्मेंसेस भी दी। और लास्ट पे कामरान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो भाई सजाद। आप विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर, और मेरी तरफ से आपको मुबारक भी हो। मैच तो नहीं जीत सके लेकिन आप भी मुबारक के हकदार हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हसन अली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, कप्तान सेंट्रल पंजाब। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा खालिद उस्मान को, KP के कप्तान। पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार परफॉर्मेंस टीम की रही, ऐसा लगता था कोई और ऑपोजिशन छू नहीं सकती। एक सफ़र को अगर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कैसा रहा आपका कायद आज़म ट्रॉफी का एज कैप्टन ऑफ KP और अपनी टीम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 3 मैचों में मैं कप्तान नहीं था, लेकिन तीसरे मैच में जो मैनेजमेंट ने फैसला किया, कोच ने, कि आप कप्तानी करोगे, तो मैंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ। और लड़कों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। जो रेस्ट के बाद हम आए और इनसे सेंट्रल पंजाब से ही मैच था हमारा, तो उससे हमने शुरू किया और जीत रहे थे, तो यहाँ तक पहुँच गए। फाइनल में अनलकी रहे थोड़े से हम। लंच के बाद आपने पहली ही बॉल पे विकेट ले ली, पूरी टीम को यकीन हो गया था कि ये बाय फार आप लोग जीत जाएंगे मैच को, लेकिन पहली बार आपकी बॉलिंग टेस्ट हुई है आई थिंक। नहीं जी, ये तो होता रहता है। अगर 9 बॉल पे वो कैच भी हो गया, अगर वो 9 बॉल ना होती तो हम मैच जीत चुके थे फिर भी, और स्टंपिंग चांसेस, लेकिन ये क्रिकेट में चलता रहता है। आपकी अपनी फर्स्ट क्लास सेंचुरी हुई इस टूर्नामेंट में, आपके पास कामरान गुलाम जैसे प्लेयर, साजिद खान जैसे बॉलर, ओवरऑल अरशल इकबाल बहुत इंप्रेसिव रहे। कुछ प्लेयर्स अपनी तरफ से आप बताएं जिनकी आप बताना चाहेंगे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, जिन्होंने आपको इम्प्रेस किया एज कप्तान। जी, आदिल अमीन ने किए, 800 के करीब रन्स किए, इसरारुल्लाह ने किए तकरीबन, और ज़ुएब खान है, ये सब लड़कों ने, इरफानुल्लाह शाह ने आउट किए, तो ये अपकमिंग प्लेयर्स है हमारे। आपके कोच यहाँ खड़े अब्दुल रज़ाक, आप लोग नेशनल T20 जीते, कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल ऑलमोस्ट आपके पास था, सेंट्रल पंजाब ने बहुत तगड़ी फाइट दी, शेयर होगी ये ट्रॉफी। मैं इनवाइट करना चाहूँगा हसन अली को भी साथ आ जाए। 2020-2021 की कायद आज़म ट्रॉफी जो है वो शेयर होगी दोनों टीम्स के बीच, और दोनों टीम्स इस कैश अवार्ड को भी शेयर करेंगे जो कि 75 लाख एक टीम को जाएगा। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, तालियां होनी चाहिए दोनों टीम्स के लिए जिन्होंने थ्रू आउट द सीजन बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेन किया। कोई आउटराइट विनर नहीं आ सका, लेकिन इतना तगड़ा मुकाबला हुआ है फाइनल का। आई थिंक दे बोथ डिजर्व द ट्रॉफी। कैप्टन हसन अली सेंट्रल पंजाब and Khalid Usman, captain KP, will share Quaid Azam Trophy 2020-2021.
And with that, we finish the presentation from down here. Yeah, the championship shared extraordinary game ended in a tie. Fantastic scenes. It's come down to final of note, a final that'll be remembered for the ages. Sajid Khan, the best bowler, and got that final wicket, made it 67 for the season, but Hassan Ali will remember this game for as long as he plays the game of cricket. It's been absolutely brilliant. The final has not been any final of first-class cricket ever before which has taken place in such extraordinary circumstances, and the result is such extraordinary in the final. Only the fifth tie in a first-class game played on Pakistani soil, and I'm guessing it was the first time it was a final. Abdul Razak, he's got the hands on the trophy. The trophy shared for a long time. It looked as if Khyber Pakhtunkhwa would run away with the trophy, but what an afternoon of cricket. What a couple of hours we've had. And with these 44 days of cricket, it was very fitting that it came down to such an exciting final, which ended in a tie. And this man on screen, he's got his hands on the trophy. Hassan Ali's got his hands on the trophy. And this Azam trophy. Well, that man on screen, he made sure that Central Punjab came back into the tournament. He led with the ball today. He's been absolutely extraordinary with the bat. He's not put a foot wrong in this tournament. Well, time to celebrate, time to take it all in. We're still sort of buzzing with that game. Hassan Ali, he must be buzzing as well. Massive occasion for all the players involved. Central Punjab have made a comeback in the tournament, made a comeback in the final. It just, the final almost mirrored their effort of those first 10 games, where they were looking as if they were out of the tournament, came back winning streak, came back extraordinarily and got to the final. In the final it looked as if it was done and dusted, and they then kept on coming back. What a game, what an absolute cracker of a game. 5-day game. We started off with the first innings, 300 all out. Kamran Ghulam 76. 4 wickets for Hassan Ali. Central Punjab got 257 for 9. And then they declared with 43 runs a lead given to Khyber Pakhtunkhwa. Qasim Akram got 60. Irfan got 4 for 73. Khyber Pakhtunkhwa again got 312. And 355, 356 was needed, and it ended in a tie. Last wicket, 67th wicket for Sajid Khan. And it was one of those that everybody involved will remember for as long as they will. Sajid Khan, 67 wickets for this tournament, but he'll remember this tournament for that 1 wicket. Central Punjab, who were already sort of celebrating before that ball, and it was tied. With the reaction from Central Punjab, who thought that they'd won the game, the crescendo came down, and it was the trophy shared. National Stadium Karachi has witnessed one of the most extraordinary finals ever in the history of first-class cricket, and we've been privileged to watch
such a game. Central Punjab with the celebration. Bilal Asif, he's got a really good voice in terms of singing songs, but he's got Hassan Ali's got that generator, which had, I don't think it had normal fuel in it today, because the way that he batted with the ball hitting the fence for fun was just something completely unheard of. Well, there's been a lot of cricket here in Karachi. We witnessed 10 rounds of 4-day games in the final. Now we've got South Africa touring. Last toured Pakistan in 2007. It starts off right at this round, 26 Jan, the first test match at Karachi. Then we go to Rawalpindi for the second test, and then it goes to Lahore and the 3 T20s, the last T20 on February 14th. So a lot of cricket coming your way even after these 10 first-class games, 10 rounds of Quaid Azam Trophy, and then the 5-day final. So South Africa, that's the tour you've got to watch out for, which is right around the corner. And around the corner is Khyber Pakhtunkhwa, and they'll have thoughts on what happened today. Assalamu alaikum once again, and what a match it was. It was a total payback of the 45 days hard work that has been put into this tournament by these players, by Pakistan Cricket Board, by the broadcasting team and by you all. बिल्कुल पैसा जो है वो वसूल होने वाली जो बात होती है उस तरह का फाइनल, और ये टूर्नामेंट ऐसा फाइनल डिजर्व करता था। जिस तरह की परफॉर्मेंस दोनों टीम्स की तरफ से हुई हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग ये दोनों टीम्स थी, जिस तरह ये टग ऑफ वॉर चल रही थी, एक टोटल क्लिफ हैंगर और टाई ही होना था कि ट्रॉफी शेयर हुई। बट हैट्स ऑफ टू हसन अली, जिस तरह हसन अली ने टर्न अराउंड करवाया अपनी टीम सेंट्रल पंजाब को हाफ मिड ऑफ द सीजन में, और उसके बाद जिस तरह इस मैच में एक दफ़ा फिर से कम बैक हुआ सेंट्रल पंजाब का। एंड हैट्स ऑफ टू खालिद उस्मान एज वेल, जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लड़वाया इस पूरे टूर्नामेंट में। तो एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ इस फाइनल का, और ऐसा ही फाइनल होना चाहिए था एक टूर्नामेंट का जिसमें इतना सारा हार्डवर्क हो, इतनी इनपुट हो लोगों की। डिस्कस करेंगे आज के दिन के हवाले से, और मेरे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है तारिक, सईद एंड अली यूनुस। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। तारिक, एंजॉय किया जैसे आपने कहा था तीसरे दिन से, सेकंड डे से, थर्ड भी नहीं, सेकंड डे से तारिक कह रहे हैं कि ये आसान फाइनल नहीं होगा, कुछ थ्रिलिंग फाइनल दिखेगा, और आज दिख गया वो। जी हाँ, और शायद दोनों में से कोई भी टीम हारने की हकदार नहीं थी, और आखिर में यही हुआ। थोड़ा सा अफसोस होगा लेकिन इत्मीनान भी होगा जो दोनों ही टीमें हैं, ख़ास तौर पर जो केपी की टीम है, क्योंकि वो शायद लगता था कि उनको जीतना चाहिए था बड़े मार्जिन से। ये आज का जो मार्का था, जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ किया था, शुरू में 3 विकेटें ले ली थी वक्फे से पहले, लेकिन जो इनिंग्स खेली यहाँ पर हसन अली ने, इस टूर्नामेंट की बेहतरीन इनिंग्स ही नहीं थी, बल्कि शायद कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की तारीख़ की ये बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। और इतना अच्छा डोमेस्टिक का मुकाबला आज तक कम से कम मुझे तो देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ ऐसा मैच। और आपको इत्तेफाक नहीं हुआ तो ऑब्वियसली हमने भी नहीं देखा होगा, मगर आपका वोट जो था वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ था और अली का वोट सेंट्रल पंजाब की तरफ था, यानी आप दोनों को खुश कर दिया इस टीम ने, अली। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और जैसे स्माइल हम सारों के चेहरों पे, ऐसा ही क्रिकेट मैच एक्सपेक्टेड था। देखिए, इतने देर से मेहनत कर रहे हैं सारा क्रू, हर क्रिकेटर्स, जैसे हसन अली ने अपने स्पीच में भी बोला कि हर बंदा बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, और शायद यही डिज़र्व करते थे कि हम इस तरीके का फ़ाइनल होना कि जब हम एंड तक हमें नहीं मालूम था कि कौन सी टीम जीत रही है। लेकिन शायद केपी के अपने आप को थोड़ा अनलकी कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैच उनके हाथ में था, उनको पहले ही मैच ख़त्म कर देना चाहिए था। नो बॉल पे रन आउट ना होता, स्टम्प मिस ना होता, तो शायद वो नौबत ना आती। लेकिन देन अगेन जैसे कि जो ब्रेविटी है उसको साथ दिया किस्मत ने भी हसन अली का, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक वो सिंगल हैंडेडली इस टूर्नामेंट को उन्होंने सेंट्रल पंजाब के लिए जीता है। बिल्कुल, जिस तरह से ये फाइनल शुरू हुआ था, शुरू के 2 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा का पलड़ा भारी था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हुआ, फिर सेंट्रल पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा। जितना अच्छा ये फ़ाइनल हुआ है, मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जिस तरह कामरान गुलाम खेले हैं, जिस तरह खालिद उस्मान ने कैप्टनसी की है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। जी हाँ, एक ही टीम में टूर्नामेंट का बेहतरीन बैट्समैन भी था कामरान गुलाम, बेहतरीन बॉलर भी था साजिद खान,
और शायद बेहतरीन हम कह सकते हैं कि स्लिप फील्डर भी थे। ओवरऑल फील्डिंग में सबसे अच्छे जो कैचेस थे वो इनकी जानिब से इसरारुल्लाह ने लिए थे। और बेहतरीन विकेट कीपर भी थे उस दम तक जब तक उनने स्टंप मिस नहीं किया रेहान अफरीदी ने। तो इन चीज़ों का इनको अफसोस तो रहेगा, लेकिन एक यादगार मुकाबला था। और ये जो 6 टीमों को खिलाने का तजुर्बा था, अब ये सामने आया है कि जब टीमें कम रखी जाएंगी फिर कंपटीशन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो सरकर्दा जो चोटी के 35 खिलाड़ी थे वो न्यूजीलैंड गए हुए हैं डाउन अंडर, तो उनके बगैर ये टूर्नामेंट हुआ और फिर भी कामयाबी से हमकनार हुआ। तो मेरा ख्याल है सब जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने शोबा डोमेस्टिक के लोग हैं, PCB के क्रिकेटर्स हैं, इस टूर्नामेंट के जो अंपायर्स हैं, मेरा ख्याल है सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी ये कामयाबी से हमकनार हुई है। बिल्कुल सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस वजह से, बिकॉज इतने टफ कंडीशंस में, इतने टफ टाइम्स में, जब पूरी दुनिया एक पेंडेमिक से गुजर रही है, वहाँ पे एक इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट होना, हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। बट अली, जिस तरह हम बात करते हैं इस टूर्नामेंट की, अगर मैं इस पूरे टूर्नामेंट की बात करती हूँ और मैं यंगस्टर्स की बात करती हूँ, मैं नई शक्लों की बात करती हूँ, जो नए फेसेस हमें दिखे, मुबस्सिर मेरे जहन में सबसे पहले एक नाम आता है, कासिम अकरम मेरे जहन में नाम आते हैं। ये प्लेयर्स आप अगर कोई ऐड इन करना चाहें इस लिस्ट में तो देखिए, सबसे खुशाइन बात तो ये है कि आपको बैट्समैन नज़र आए यंग। हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में कि फास्ट बॉलर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, रॉ टैलेंट उनमें से आता है, बैट्समैन ज़रा बिल्डअप होते हैं। तो यहाँ पे पहली बार हमें ऐसा लगा है कि बैट्समैन मुबस्सिर का आपने जिक्र किया, कासिम अकरम का आपने जिक्र किया, रेहान अफरीदी का मैं डेफिनेटली यहाँ जिक्र करूँगा, वो बहुत पोटेंशियल है उसमें एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, शायद वो भी बहुत अच्छे तरीके से आए हैं। बॉलर्स में अगर हम बात करें, शाहनवाज धानी ने बहुत इंप्रेस किया है, इरफानुल्लाह शाह ने बहुत इंप्रेस किया है, मोहम्मद वसीम ने बहुत इंप्रेस किया है। देन बहुत सारा मतलब बहुत पॉजिटिव्स हमें नज़र आए हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो अब छुप के रहना इस टैलेंट का बहुत मुश्किल हो गया है। और ये क्रेडिट देता हूँ मैं PCB को, नदीम भाई को, जुनेद ज़िया को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, ब्रॉडकास्ट हुआ है। TV पे आने से इस पूरे टूर्नामेंट के जो 100% जो रिजल्ट है वो बदल गए हैं, बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ क्रेडिट देना चाहिए तो वो हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है तारिक, उनको देना चाहिए। जिस तरह की पिचेस बनी हुई थी, जो क्यूरेटर्स हैं यहाँ के, ज़बरदस्त पिचेस थी ऑल ओवर। जब तक हमने पूरा ऑल टुगेदर कायदे आज़म ट्रॉफी देखा, जो मैचेस यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए, जी हाँ, आसान नहीं था। 11 मैचेस बैक टू बैक एक ही वेन्यू पर कराना, और फिर उनमें से इतनी अच्छी जो क्रिकेट देखने में आई उसकी वजह भी यही थी, इनकी मेहनत। और ज़ाहिर है कि कई मैचेस में हमने देखा कि नतीजा भी सामने नहीं आ सका, लेकिन वो बैटिंग विकेट सी तो मुख्तलिफ तर्ज की हमने विकटें देखी, सीमिंग पिचेस भी, और आखिरी दिन आज स्पिनर को भी मदद मिली, बैट्समैनों ने रन्स भी किए। तो ओवरऑल जो ग्राउंड स्टाफ है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और ये सीज़न जो है बम्पर रहा है एक लिहाज से नेशनल स्टेडियम के लिए। यहाँ इन बिटवीन इन मैचेस के हमने देखा था PSL का भी टूर्नामेंट जो रह गया था अधूरा, उसको मुकम्मल कराया गया। इसके बाद यहाँ टेस्ट मैच होने वाला है, और ओवरऑल कराची के लिए तो ये बहुत ही लाजवाब मौसम रहा है, क्रिकेट का मौसम। बिल्कुल भरपूर क्रिकेट होती रही है, भरपूर मज़ा होता रहा है। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े रहे, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जिस तरह आज का ये फाइनल खेला गया, उससे साबित होता है जो लोग, जिनका दिल लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट से हट गया था, जिनको लगता था कि फ़र्स्ट क्लास या फिर टेस्ट मैचेस जो हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होते, आज यहाँ ये बात फिर से प्रूव हो जाती है कि जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जब अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलती है, जब अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, सो इंटरेस्ट अपनी जगह आ जाता है। और ये जो लास्ट 1 घंटा था इस फाइनल का, वहाँ आपने देखा कि जिस तरह इंटरेस्ट बिल्ट होता रहा, और ऑल टुगेदर 5 दिन का निचोड़ जो है वो इस आखिरी घंटे में निकल आया। मगर आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े रहे। बट अगर मैं इस सीज़न की बात करूं तो यहाँ तो ये टूर्नामेंट का इख्तिताम ज़रूर हुआ है, मगर अभी तक डोमेस्टिक सीज़न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस पेंडेमिक के दौरान भी हम मुसलसल अपना डोमेस्टिक जो क्रिकेट सीज़न है उसको बहाल रखा हुआ है। आपने नेशनल T20 देखी, फिर आपने कायदे आज़म ट्रॉफ़ी देखी, और अब आप 8 जनवरी से पाकिस्तान कप भी बराह रास्त देख सकेंगे। बट यहाँ इस टूर्नामेंट का इख्तिताम करते हैं। आप लोग सबका बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम का बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत शुक्रिया कि हम तक क्रिकेट पहुँचाई। और आप लोग सब ने अपना ख्याल रखना है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बोल्ड कर दिया है यहाँ पर हसन अली, मैग्निफिसेंट फ्रॉम उस्मान सलाहुद्दीन। They increased the intensity in exactly that, down the ground.
overtaken Saadat Ali after more than 36 years. This record has been broken. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, निहायत शानदार छक्का. Shot ball in the air. That first wicket got. Bold कर दिया है यहाँ पर. Hits it big out of the ground. Goes again, goes down. Is that gone all the way? You bet it has. Who will catch it? It is Sameem Gul who takes the all-important catch. Goes leg side, goes big. Has that gone all the way? Gets to 100. Sajid Khan, 67 wickets. What a time to get that one. Match side, trophy shade. खाली पे